Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Ravi Sir Biology, and in this session we will talk about genetics. As we have been started genetics, the introduction and some terminology we have already discussed, and here today we will talk about in this session the introduction of Sir Gregor John Mendel. He was called father of genetics. Sir Gregor John Mendel was called father of genetics. Being a mathematician, he become a great popularity. He got a great popularity of genetics, and he was considered as father of genetics because of his experiment over the 16 years consistently. He worked 6 years consistently. He worked on the pea plant, and after the death of this man, he got that popularity. Means here he faced a lot of trouble, and up to his death, did not get such great name for his life. But later on, he got the name of his fame and was called father of genetics. What is the thing? What is the birth? What is the introduction about this man, Gregor John Mendel? We have to discuss here. The great man, Gregor John Mendel, was born on 22nd of July 1822. He born in Germany, but his nationality was of Austria. He was actually from Austria, and nationality, and he was called. He was got born in 1822 in Germany, and he got died in 1884. So his death was 1884. Birth was 1822 in Germany. Another thing about his experiment was published. The thing is this: he worked on pea plants for 6 years continuously. For 6 years he worked on biology. Being a mathematician, he worked on biology, and he worked really very hard. And उस हार्ड वर्क का रिजल्ट ये था कि एक बहुत बड़ा सेट ऑफ रूल्स दिया था, सेट ऑफ लॉ दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने. उस लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया. आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ दिस, ही वाज अ बिट फ्रस्ट्रेटेड. स्टिल ही वाज वर्किंग विद द सेम एनर्जी, एंड he finally he got died. Still it was not published. Finally, after his death, when he got died in 1884, 16 years after his death, means in 1900, three scientists, the Hugo de Vries and his team, Hugo de Vries, Tasmak, and Correns. These three people, I'm repeating the name: Hugo de Vries, Correns, and Tasmak. These three people, they work on the same thing, and they gave a theory, a law as well. And that theory was, everything of the theory was similar to the theory was given by Mendel. जो मेंडल ने theory दिया था, बिल्कुल वही लाइन का लाइन, वही एक्सपेरिमेंट, वही एक्सप्लेनेशन दिया था ह्यूगो de Vries ने, कोरेंस और टास्माक ने. फिर फाइनली ये देखा गया कि ये जो लॉ दे रहे हैं 16 ईयर के उनके डेथ के बाद भी, वो वही लॉ है जो लॉ बहुत पहले एक किसी साइंटिस्ट ने दिया, और वो आज हमारे बीच नहीं है. और इस वजह से उनको जो है, उनको ये फेम दिया गया था, क्योंकि वो थे नहीं, और इसीलिए उनके रिस्पेक्ट में बायोलॉजी वालों ने, इस बायोलॉजिकल यूनियन वालों ने क्या किया, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से एक्सपोज कर दिया. और इस तरह ही वाज नोन एज विद हिज ग्रेट एक्सपेरिमेंट फॉर 6 इयर्स ऑन पी प्लांट. एक और क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही क्यों होता है. तो और क्लियर कर दूं मैं, बोर्ड्स का भी क्वेश्चन हो सकता है. ये इजिली अवेलेबल होते हैं, ये प्लांट्स हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह ये पाए जाते हैं, और इजिली अवेलेबल होने के साथ साथ इनमें वैरायटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं. आपने देखा होगा इसके फ्लावर का कलर पिंक कलर, पर्पल कलर, व्हाइट कलर, जो हम लोगों के एरिया में भी ब्रिंजल कलर हम लोग के एरिया में पाए जाते हैं.
तो ये हो जाता है जनरल अवेलेबिलिटी और इनके अंदर वैरायटी। तीसरा, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 90 डेज का होता है, सिर्फ 3 महीनों में कल्टीवेशन हो जाता है, इसलिए जो क्रॉस कराया उसका प्रोडक्ट हमें 3 महीनों के अंदर ही मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से ही वर्कड ऑन द पी प्लांट, इसीलिए पी प्लांट पे काम किया था। अब बात करते हैं कि वो जो रीजन है जिसके वजह से इनका पब्लिश नहीं हुआ, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा उस समय ये पब्लिश नहीं हुआ। पब्लिश कब हुआ? बहुत लेट से स्टार्ट पब्लिशिंग हुई, और वो लेट पब्लिशिंग ये थी कि उसके पीछे रीजन ये था, 2-4 फैक्टर्स, 2-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, शायद ये आपके काम भी आ सकता है या आपका नोट्स भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट रीजन है, बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट। ऑफ कोर्स एक जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बहुत कोई सब्जेक्ट आपका है, आपके सब्जेक्ट में किसी और सब्जेक्ट का इंटरफेरेंस होता है, वो भी डीप लेवल पे, तो फर्स्ट टाइम तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल एक टसन सा हो जाता है। आई थिंक इट वाज द थिंग, इट वाज द रीजन, बिकॉज ऑफ स्टडी ऑफ सर्टेन बुक्स द एविडेंस वाज नॉट सो क्लियर, बट स्टिल वी कैन मेक सम आइडियाज ओवर द स्टडीज ऑफ सेवरल बुक्स कि ये बायो के ना होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट रहा है इनका, जिसकी वजह से पब्लिश नहीं हुआ था। एंड द सेम थिंग आई हैव मेंशन्ड ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट इट। बीइंग अ मैथमेटिशियन, how can give or how can he become? Nobody was expected that he became the father of genetics. It was not so expecting. So this is the very first reason. Second is, being a mathematician, biology concept was not acceptable. मैथमेटिशियन होने की वजह से कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया। थर्ड है, मेंडल वाज टॉकिंग अबाउट फैक्टर। उस समय जीन और क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने जीन और क्रोमोसोम की जगह पे फैक्टर वर्ड यूज किया था। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया है, फैक्टर यूज किया था। फैक्टर की जगह जीन करना था, जो कोरेंस, टस्मैक और ह्यूगो डिवरीज ने किया था। तो ये तीन ने इस जीन को इंट्रोड्यूस किया था एट द प्लेस ऑफ फैक्टर। और फोर्थ, पब्लिशिंग ऑफ वर्क वाज नॉट प्रॉपर्ली। उस समय, बहुत पहले की बात है, तो उस समय बायोलॉजी और ये साइंस जो है उतना एक्सेप्टेबल नहीं था, और उतना एक्सेप्टेबल नहीं होने की वजह से इनके उस समय डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द thing was not accepted properly. And these are the four reasons, main reasons. Because of these reasons only the publishing was very late. So today we have introduced all about the Gregor-John-Mendel, and in the next video we will talk about the experiments, the law he had given about it. Stay with me for more coming updates. Thank you.